तो होराइजन ज़ीरो डॉन के को वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हो गेमर्स। तो फास्ट ट्रैवल करके मैं इधर तो आ गया, पर इधर मुझे थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा। ये वाला क्वेस्ट करना है, बिटर क्लाइंब। पहुंच तो जाऊंगा मैं, पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में मुझे और ये मशीन्स नहीं चाहिए। हालांकि मैं अब सारी मशीन्स ओवरराइड कर सकता हूँ, ट्राई करे क्या। इसके लिए मैं सोच तो रहा था अलग वीडियो बनाऊँगा, वैसे वो भी मैं बनाऊँगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे ग्रास नहीं है, मैं चुपके से इसके पीछे जा सकता हूँ। वैसे भी ज़्यादातर नीचे ही देखते रहते हैं। मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सोच रहा हूँ कि बाकी बड़ी मशीन्स की जाए, एलीट एनिमीज जो रहते हैं उनको ओवरराइड करूँगा। ओके, बहुत शानदार। इधर भी देख लो, ज़रा थोड़ा क्लोज लुकअप लेते हैं उस जगह का। वो क्या रहा है? तो क्या सर्कल क्या लगाने लगे ये लोग? भाग रहा है जिसको मैंने ओवरराइड किया। पहले में लगा वो तो। ओके, अब मारा एक। चलो छोड़ो, लगे रहने दो। इनको ओवरराइड करने में यही प्रॉब्लम है, इतना कुछ उस टाइप का डैमेज नहीं देते हैं। जाना किस साइड है? ओ भाई, मुझे लगा मेरे को मारने आ रहा है। किस साइड जा रहा हूँ मैं? जाना यहीं से मेरे ख्याल से। मुझे मैप में क्यों नहीं दिख रही है जगह? अच्छा, अब दिख रही है। वही मैं सोचा दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ दिख रही है ऊपर साइड। जगह हिल रही है। बिटर क्लाइंब, ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं? ओके, दिख गया, रास्ता दिख रहा है मुझे। टाइम लगेगा उधर पहुंचने में। लॉन्ग लेग को भी मैं कर सकता हूँ ओवरराइड, पर इन छोटी मोटी मशीन्स को ओवरराइड करने का यही मतलब है। ये लोग इतना कुछ खास नहीं है, ये एक दूसरे को मारने में ही काफ़ी टाइम लगा देंगे। वो थंडर जो है, वो थंडर जो है, एक सेकंड रुकना ज़रा। पहुंच ही गया हूँ मैं, स्कैन ज़रूर करूँगा उसको। थंडर जॉ ही है, थंडर जॉ ही है। मैं बस चाह रहा हूँ कि स्कैन हो जाए। स्कैन से मेरा मतलब है उधर जब मैं जाऊँगा तो मैप में दिख जाएगा, ताकि मैं जल्दी इधर फास्ट ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि मुझे मैप में कहीं और थंडर जॉ की लोकेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे और कोई एनिमीज़ है भी नहीं। ये कौन से हैं? ये पास जाना पड़ेगा ताकि वो मेरे मैप में स्कैन हो जाए। कैंपलर, ओके आया। मुझे और थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। शिट 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 शिट, निकलो निकलो निकलो। हो गया स्कैन। अब मैं इसको वापस आके वो करूँगा, क्या बोलते हैं, ओवरराइड। अच्छा, फास्ट ट्रैवल करके डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं, मुझे इसकी लोकेशन नहीं ढूंढनी पड़ेगी। बैंडेड कैम्प, मतलब बैंडेड्स। हेलो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। तो ये मैं अभी देख रहा हूँ इस क्वेस्ट का नाम, द माउंटेन दैट फेल। अजीब नाम है थोड़ा। यहीं आना था ना मुझे। एक सेकंड, यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं? यहाँ पे कहीं पे रास्ता है? दिख तो यही रहा है। एक सेकंड, यहाँ से कहीं से घूम के आना है क्या?
ओके दिख गया मुझे रास्ता। ये है जो माउंटेन, ये है वो माउंटेन जो गिरा है। रास्ता गायब हो चुका है यहाँ का। The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? ओवरराइड कर लूँगा मैं, इसलिए तो इतने सारे कॉल्डन मैंने कंप्लीट किए हैं। बस मैं गिर ना जाऊँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से कहाँ जाना है मुझे? यहाँ से कहाँ जाना है यार? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये क्या मजाक है? ओह ओके, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने ये किया। मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके दिख गया शायद से। थोड़ा अजीब है ये। Stalkers in the open, watchers on the other side. अरे यार ये गलत है, यहाँ मुझे पैदल जाना पड़ेगा मुझे इतनी दूर। कहाँ है स्टॉकर? कहाँ है? ओवरराइड कर लेता हूँ मैं, जब तक वापस में लड़ रहे हैं तब तक मैं निकल लूँगा। इसके सामने भी वो आ रही है। ओह शिट ओह शिट ओह शिट ओह शिट। आ जा इधर। लगे रहो तुम लोग आपस में लड़ने में, मैं निकल लूँगा चुपके से। मैं किसी और से भिड़वा देता हूँ इनको। जा उधर जा, जल्दी जा। वो आ रहा दिख गया। पर ये इधर ही रहेगा तो फिर दोस्तों मैं मार ही देता हूँ। लड़ो आपस में। देख कैसे रहा है मुझे ये। इसी का राउंड लगाता हूँ जब तक। कहाँ आ गया? शिट, तुम लोग लड़ते रहो, मैं निकल रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, तो बहुत है। मेडिसिनल हर्ब्स कहाँ है? अरे अभी भी मार रहा है। जाना किस साइड है? ओके दिख गया। मैं गिर ना जाऊं बस। अभी भी लगा हुआ है यार मारने में। मेरे माउंट को मार दिया क्या? अभी भी मारने की कोशिश कर रहा। नहीं, मेरे माउंट ने लगता बजा दी उसकी। ओ मेरा माउंट। अच्छा ओवरराइड कर लिया मैंने, काफ़ी मदद कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है? ग्लिंट हॉक, इसको भी मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। काफ़ी काम आई है ये चीज़ें मेरे।
किसी उड़ते हुए ना आए। शूट ना करे पता करने के लिए बस। ओ भाई ये क्या है? इधर पहुंचने में ऐसे सॉरी यार। सही में काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने कॉल रन कर लिया। अरे जाओ उन पे हमला कर। Okay, Aloy, now what? ओ भाई एक और है। छुपू कहाँ पे मैं? निकलो एक काम करके निकलते हैं। ओह मेरे पीछे ही आ रहा है वो। चलो जल्दी निकलो। मेरा रेवेजर कहाँ है यार? मेरा रेवेजर कहाँ गया? वो अब मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है। जाना कहाँ से है? यहाँ पे भी है। जाना किस साइड है यार? उड़ने वाले तो इधर भी आ जाएंगे। बच गया मैं। कुछ तो हुआ वहाँ पे। अरे बहुत शानदार। Guessing that I'm almost there. Correct. इसको मैं ओवरराइड तो कर सकता पर मुझे नहीं लगता वो नीचे आने वाला है। मारना पड़ेगा क्या मुझे? मैं भाग लूँ इधर से। ओ भाई क्या कर रहा है ये? मैं मैप के किस साइड हूँ? कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे। अब दिख रहा है। Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before. To a point. You'll see. अब तो कोई पीछे नहीं पड़ा ना? उसको मैं मार सकता था पर मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं लड़ना चालू करता You शुरुआत से made a ही। climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. ओके ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया। जो कि उसने ऐसा मारा। Don't look down. Don't look down. कुछ है क्या नीचे देखने लायक? इस साइड क्या है?
मुझे लगा मैं उस साइड जा रहा हूँ, ये कहाँ गया मैं? This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. रुक जाओ, यहाँ पे क्या है? कुछ है? For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. We're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. ओके, चलते हैं अंदर। इस डोर के अंदर ऐसा क्या है? Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. एक और केव। मैं दूसरा रास्ता चेक करूँगा इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ। मुझे लगा ये कुछ खुली जगह है, वो तो क्रेट है बस। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ माउंटेन है जो खुला हुआ है यहाँ से। Mind your footing. बहुत शानदार गिर गया मैं। मुझे पता चल गया था जैसे उसने बोला, मैंने ध्यान दे दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। नीचे साइड ही आ गया। थोड़ा आराम से करना चाहिए तो मुझे। ओह, ये कौन सी जगह है? ये कोई नई जगह। सर्च द रूइंस फॉर द मास्टर ओवरराइड। यहाँ पे होगा मास्टर ओवरराइड। Guess that's my way across. Don't think, Aloy. Just do it. I couldn't have said it better myself. ये रास्ता क्या है? मैं तो डायरेक्टली इधर आ गया। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को सेव करना पसंद है। मैं तो कूद गया डायरेक्ट। Glad that's over. नीचे गिरने से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है?
और थोड़ा सेव लॉस्ट करने से बुरा, लूज करने से बुरा। Not this way. Maybe further up the shaft. ऊपर जाना, ओके, शायद से ऊपर ही जाना। मैं ध्यान नहीं दे रहा मैप में, थोड़ा लिखा है, साइन आ रहा है कि ऊपर जाना है। This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. रहने दो ये ऑडियो लॉग्स यहीं पे। जगह देखें क्या ये, आराम से। मैं यहाँ से नहीं गिरना चाहता, यहाँ पे बचने की जगह भी नहीं है। कितनी अंदर जाना है यार मुझे। जगह देख रहा हूँ बस मैं। Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं जा रहा हूँ अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। Elizabeth. What is this? रुक जा, से पहले मैं दूसरी जगह चेक करूँगा, कुछ भी काम करने से पहले। जस्ट ये चेक करने के लिए कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does.
Not like this. There's so much we... Guys, you know me, I'm not good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz, I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. that was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. बस इतना ही था। टेड फारो को इतना ही कहना था। मशीन्स मेरे ख्याल से उसी ने बिल्ड की है। इस साइड क्या था? ये नहीं था यहाँ पे। और पता नहीं कितने ऑडियो लॉग्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे। और मैं मास्टर ओवरराइड ढूंढने के लिए पता नहीं मैं कहाँ कहाँ चढ़ रहा हूँ। पहले नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर चढ़ता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर चढ़ता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. मैं डायरेक्ट छलांग लगा सकता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता इस टाइप की छलांग क्यों लगाता हूँ मैं। मुझे वो पुल पकड़ना ही पकड़ना है क्या? I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By subtraction. I can make a better list. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. इस जगह पे क्या है? ये तो मेरे ख्याल से वापस जाने का कोई रास्ता है जो कि मैं करना नहीं चाहता। गलती से भी पता चला वापस नीचे चला गया मैं।
When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. अल्फाज ये क्या है? I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Captain atmosphere. इस जगह की बहुत हालत ख़राब है। इस गेम की स्टोरी से तो यही पता चला कि बहुत हालत ख़राब हुई है। जो भी हुआ बहुत ख़तरनाक हुआ है, इसकी वजह से डिसीजंस मेक करने पड़े। He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. चलो मास्टर ओवरराइड तो मिल गया कम से कम। The master override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. अब इतनी दूर नहीं जाना, प्लीज़ कह दो कि कोई आसान सा रास्ता है उधर जाने के लिए। तो शायद से दिखा तो था मुझे। Is that good? Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Okay, thank you for the obvious. मुझे लगा मैं नीचे गिरने वाला हूँ। इस गेम में बहुत बार ऐसा हुआ है। जाना किस साइड है मुझे? It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer.
सही में यार। ऊपर ऊपर कैसे जाऊं मैं? कहाँ जा रहा हूँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चढ़ तो गया मैं ऊपर, पता नहीं कहाँ से। मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं आना था मुझे, पर कोई नहीं। पता नहीं कैसे पहुँच गया मैं इधर। You're here. For a moment, What? our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology.
It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing.
ठीक है, अब मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ एडीज़ को। मुझे नहीं करना प्ले, सही बता रहा हूँ। बहुत ऑडियो ये डाटा पॉइंट में प्ले कर चुका हूँ। क्राफ्ट लाइन्स, रुक जाइए, हट जाने दो, नहीं तो ऑडियो प्ले हो जाएगा। ओके, फाइनली कंप्लीट हुआ ये वाला क्वेस्ट भी। स्टोरी के बारे में पता चल रहा है, काफ़ी पता चल रहा है। अब क्या करना है? I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Durham, I know he'll defend the city. But the Spire... ओके ठीक है, मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ सबसे पहले तो। अभी तो फ़िलहाल नहीं कर सकता, तो ठीक है यार। मुझे लगता है ये वीडियो मुझे रोक देना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत एडिट भी करना है, थोड़ा देखना है कि क्या पार्ट में हटा सकूँ, क्योंकि वीडियो को वैसे ही लंबा है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में फिर मिलूंगा मैं होराइजन ज़ीरो डॉन के एक और वीडियो के साथ। तो ख्याल रखो अपना।